Welcome, sir. Over to you, sir. Sir, you are on mute. Yes, yes, yes. Hi, everyone. Hello, sir. So I'm just going to share my screen. Then you can clearly uh, able to see. Sir, wait few more minutes. Yeah, sure, sure, sure. Yeah. So today we will discuss basically, I'm not going to share. I'm waiting. So today we are going to discuss about the opportunities for pharmacists in Australia and New Zealand. So many of you always complain that the pharmacy profession. Sir, can you hold on for 2 to 3 minutes because we have lost the connections of that laptop. Okay, okay, So okay. just give us 2 3 minutes more. Yeah, now we can start, sir. Okay. So hi everyone, my name is Dr. Akram Ahmed. So I'm a pharmacy lecturer here in Australia. So I have around 10 years teaching experience in India, Malaysia, in Australia. So most of the students in India, they always complain about the opportunities, very low opportunities or no Sir, you are on mute. Okay guys, so I'm sorry I was mute. So my name is Dr. Akram Ahmed. So I'm a pharmacist and pharmacy lecturer in Australia. So I have last 10 years teaching experience for recruit pharmacy in pharmacy practice related subject. So I was in India, then I moved to Malaysia. I worked there 4 years. Last 6 years I'm in Australia. So I have basically, I can say, the experience in 3 countries living and working as a pharmacy lecturer and pharmacist. So a lot of you always, whenever you are in pharmacy, basically in the final year of your degree, so you always complain that there is not that much scope for pharmacy. Okay, so this is not true. There is a very good scope. There is a very good degree. You choose basically. You already in the degree. You might be going to complete or completed, or some of you already maybe year 1, 2, or 3, whatever. So pharmacy is one of the very good course. I can say in the world, there is a high demand for pharmacists, especially in Australia and New Zealand. So in this session, I'm going to discuss as a pharmacist how you can migrate to Australia, how you can practice in Australia as a pharmacist, or how you can find a job from India to Australia. So what is the process basically to migrate Australia and New Zealand? So basically, academically provide 2 services. One is the study abroad. So if you want to study in Australia, any course, whatever, we will help you to complete your admission process, and we do not charge anything. It is a free of cost, this service from us to you. Okay. Second services we provide basically the pharmacist registration and find a job in Australia and migrate to Australia on a permanent visa. Australia, New Zealand, or Gulf country, wherever you want to practice as a pharmacist, you can work. Okay, so I will discuss one by one here. So basically, if you are a pharmacist, so you need to work in retail pharmacist or hospital pharmacist. I am discussing here based on the government requirement of Australian government and New Zealand government requirement. Okay, so some country might be having a different opinion or different with the process. So once you completed your Bachelor of Pharmacy, so you can work in Australia as a retail pharmacist. You also can work as a hospital pharmacist. So you need to complete some steps in order to work in Australia as a pharmacist. Okay. So there's a first step, initial skill assessment you have to do with Australian Pharmacy Council. So this is no need to worry. We will complete your process. You just need to provide us your documents only. Your like a degree,
your transcript, your passport, registration, all these documents, simple documents. Okay, this is very easy step. The next step is the KAPS exam. You need to pass this exam. This is an online exam. There are several centers in India. Currently, there are 8 centers, so you have to choose one of them, like Mumbai, and Pune, Bangalore, Hyderabad, and Delhi, and Noida, Gurgaon. So we have 8 centers in India. Anyone you can choose, and you have to write this exam. So academically, we provide you the 4-month coaching to pass this exam. This is a very easy exam. This is an MCQ based exam, and they will just need just 50% passing mark. So this is very easy exam. If you compare to the some other country, high income countries like Canada or US, so Australia have a very easy process, very easy exam to pass. Anyone can pass. And in our last batch, there was a 93.33% student passed from our from academically in their first attempt. So you can imagine this is very easy exam as compared to we are compared like a GPAT. So GPAT is very tough exam as compared to KAPS. Okay. Then you also need to pass this English test called PTE or IELTS. We will also provide you the coaching to pass this exam. So these are the 3 steps: skill assessment, KAPS, and PT. We will help you to complete all these steps. After that, you can file your PR visa, or you can start looking a job in Australia. Academically, will also help you to how you can find a job in Australia, and what are the agencies here. They recruit the pharmacists from overseas, and your CV, your cover letter, what are the websites. You need to find a job. We also give you the overview, like how you can find accommodation, how to live in Australia, how you can migrate, all those things. If you have what, and yeah, at the end, you can ask me any questions if you have. I'm just explaining you here. So retail pharmacists and hospital pharmacists have the same set of the skills you need basically: skill assessment, KAPS, and PT, and that's it. And these 3 steps you can complete within 3 to 6 months. Then you can migrate to Australia. But if somebody is a pharmacist, did Bachelor of Pharmacy, now they are working in pharmaceutical industry. So if they have a working experience, so still they can migrate as an industrial pharmacist. Okay. So first step is the skill assessment, then the PT exam. There is no need to write this pharmacy exam. I will discuss in detail later on. Same for those are a diploma holders. They also can migrate to Australia. But they cannot work as a pharmacist. They only can work as a pharmacy technician. Okay. So same for them. Pharmacy assistant, like skill assessment, then English test, then they can migrate. Okay. Even some of the pharmacy lecturer, those did Master of Pharmacy or PhD, and they are working as a teacher or pharmacy lecturer in India. They also can migrate to Australia as a university lecturer. Okay. So the first step to become a pharmacist in Australia. So here, if you can see, this is the Australian map, and this is a very nearby country. This is the New Zealand. So New Zealand is a very small country as compared to Australia. So Australia have a more opportunities and a big land. There's a lot of jobs available in Australia. And Australia is a very easy exam, and the process is very easy for Australia compared to New Zealand as well. So migrate as a pharmacist to Australia, you need to complete 3 steps. First, initial skill assessment, then KAPS exam, then English. So this is the same. You need to complete the process for New Zealand and Australia as well. Same process. But what is the difference in these 2 countries? So Australia does not require any working experience. So if you are a fresher, you just completed your Bachelor of Pharmacy, you can migrate to Australia. Okay. But in case of New Zealand, you must have at least 1 year working experience. This is number 1 difference. And secondly, for Australia, there is an unlimited attempt. You can attempt as many you want. There is no restriction. But for New Zealand, only have a 2 attempt only. There's no 3rd attempt for you if you fail in the exam. So these are the 2 major difference in Australia and New Zealand. But these 2 countries, you need to write the same exam, KAPS you need to write, and you can migrate to either Australia or New Zealand, wherever you want.
So the first step, you need to complete skill assessment with Australian and Indian Pharmacy Council. So that they will see your degree, your transcript. If you have degree, very good. If you do not have degree, you have it like a course completion certificate from your HOD or your dean or principal. Maybe from a university, you have a provisional degree or you have a B.Pharm transcript, mandatory. And then we need your registration as a pharmacist in the State Pharmacy Council. For example, you are from Gujarat, so you must be a registered pharmacist in Gujarat State Pharmacy Council. And we need your passport. We also need like secondary national ID, like our Aadhaar card or any other card. Maybe you have like driving license, whatever you have, you can provide. And birth certificate we need. If you do not have birth certificate, still you can show that your 10th mark sheet and passport size photograph. So these are the documents required for initial skill assessment when we are applying to Australian Pharmacy Council. So the fees you need to pay 1310 AUD. So it is about 70,000, 65 to 70,000 Indian rupees, I can say, to complete this step 1 to migrate to Australia. Then next step is the KAPS exam. So KAPS exam, nothing but they are saying that the knowledge assessment of pharmaceutical sciences. So whatever you studied in your last 4 years in pharmacy, now they want to check you are equivalent to an Australian pharmacy degree holder. So once you pass the exam, now you will be equivalent to an Australian pharmacist. Okay. So this is the easiest exam, and you need to pay the fees 2230 AUD. So around 3,500 Australian dollar you need to pay to the Australian government for Australian Pharmacy Council, basically to complete this process. Then this is the exam, basically the KAPS exam. So there is basically a 4 domain. Generally, they will ask the question from pharmaceutics, pharmacotherapy, medicinal chemistry, and pharmacology and physiology. Okay, and there is no negative marking. And the passing marks are the 50%. So I personally believe if you score, if you can correct 35 questions out of 100, you will pass 100%, because rest of the 65 questions, if you just guess, you can correct more than 15 questions and you can pass the exam. There is no negative marking, so you have to attend all of the questions. Then once you give the exam, within 3 weeks, you will receive the result. Okay. Then you also need to pass this English test. So English test, you can give any of these like a IELTS, OET, PTE, or TOEFL. Any of these tests you can go, but PTE the easiest exam is the PTE, so you can go for PTE. Some of you might be asked, we need this English score in academic or general. So basically you are leading to the registration, you need academic PTE or academic IELTS. Okay. The next is the industrial pharmacist. So if you want to migrate to Australia as an industrial pharmacist, then the number 1 step is skill assessment. Then number 2 is the PTE exam. Number 3 is the EOI, means expression of interest, then visa file. Then you can come to Australia. There is no need to write any pharmacy exam. Okay. So, but the job opportunities, 90% job opportunities available in the retail pharmacy or in the hospital pharmacy. So if you are a fresher, please prefer to go in that way. It is very, very easy for you to get a job and migrate to Australia easily. And there is a high salary also in the retail pharmacy and hospital pharmacy in Australia. So highly recommended to go to in that pathway. But if you already working in as an industrial pharmacist, so still you can migrate as a industrial pharmacist. But since it is not much population in Australia, so they generally import the medicine from other countries. That's why there's not much opportunities in pharmaceutical industry in Australia. And if you did your B.Pharm, PharmD or diploma, and you are working as a pharmacy technician, you have working experience at least 1 year, then you can apply for as a pharmacy technician. They also need to write any pharmacy exam. Only English test you need to write, and we will provide you the coaching for this exam, so easily you can pass the exam. And then
you need to apply for these 5. You are eligible. Pharmacists are eligible to apply these pharmacy visa, these 5 visa. Whether you are a retail pharmacist or hospital pharmacist or industrial pharmacist, or even you are a pharmacy technician, you are eligible to apply these visas. So first 2 visas is called, this is a PR visa, permanent visa. You can live and work permanently in Australia, or if you want, you can change your citizenship to Australian citizenship after 3 years. Or if you do not want, you can continue to live on PR and you can be Australian citizen, Indian citizen. Okay, and there are 3 work visas, 482, 494, 407. So these are the possibilities. Once you pass the exam, company will sponsor your visa. They will give you a job from India itself. But the problem, generally, they will give you some condition. Condition is that you need to work at least minimum 3 years to the same employer. You cannot change your employer for 3 years. Then after that, you can change. Okay. But I highly recommend it, go for permanent visa. But if you want a work visa also, it's not a bad thing. So, you can. So some of you always ask me that, sir, do I need a sponsor to get a visa? So answer is no. Government itself will sponsor you your visa. There are several states here. They will give you the visa. Basically, they want to come to work in their state because there is a huge opportunity. There's a lot of pharmacists in need. Pharmacists are not available in Australia. You can imagine in one figure I can give you. The Australia only have 8 pharmacy only 8, and India we have currently around 6,000 pharmacy college. So you can imagine that how many pharmacists they need. They don't have pharmacy schools much. Okay, that's why they need the foreign pharmacists to come to Australia. So once you complete this process, then you can work as an intern pharmacist. You need to work for 12 months or 1 year. Basically, you need to work under a supervision of a registered Australian pharmacist. Okay, so you need to learn how to work in Australia, how to communicate, and law, how to work in Australia, all those things. And this is a paid job, internship. You will get around $25 to $28 per hour salary. Okay. Then after 1 year, you will be a independent pharmacist. Then you can work in industrial pharmacist, or you want to work in hospital pharmacist, community pharmacist, wherever you want, or a consultant pharmacist, clinical pharmacist, wherever you want, you can work. Okay. On an average salary for pharmacists in Australia is about 80,000 to 120,000 yearly Australian dollar, or in Indian rupees, if I convert it into 3 to 5 lakh per month. So 6 to 8,000 on an average, pharmacists earn dollar in Australia. And average time required to migrate to Australia at least minimum 6 months to 1 year. So that's all. And there is one feedback form in the comment box. Please fill that form. So if you have any questions, you can ask me later on as well. And these are some of the WhatsApp also. You can contact us if you have anything. Now I will take some of your questions. So please do ask me whatever you have in your mind. Okay. So now yes, we can start to take your question. Good afternoon, sir. How much time Yes. does it take for us to get an internship after we have qualified the KAPS exam? You can get within 1 week, 2 weeks. Nowadays, people are getting very fast. Our last batch student, all of them got permanent visa, and some of them already in Australia, and they got the job. So to getting a visa and job, it may take 3 to 6 months once you pass the KAPS plus English. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, next please. Guys, please ask questions. Don't keep in your mind, so कोई भी अगर if you have any doubt, anything. Yes, Vikash. Sir, sir, my question is that I have completed diploma in pharmacy from India. Later than I've done B.Pharm. So how I applied the skill assessment? Yes, you are eligible basically. If someone did diploma first, then you did Bachelor of Pharmacy lateral entry. So in India, generally we have one provision that you can get admission in second year.
So your BPharm degree is 3 year and diploma you have 2 year. Still you are eligible. You can apply for skill assessment. So skill assessment we will do. So no need to worry. Basically, you just need to provide us your diploma and BPharm degree of certificates and all those things. So the when we are filing with Australian Pharmacy Council, so there are the option the other. Then we have to choose other, and then we have to mention that diploma in pharmacy and where from where you did all those information. So you are eligible basically lateral entry BPharm also. Yes, next please. Yes, because do you have any other question? Yes, sir. Just my question is that I got my registration just after diploma. So So we need after proof. you can update. You know, State Pharmacy Council. It is a very small job. Even myself also did diploma first. Then I did my bachelor in pharmacy. Then I did my Maldeep, Pooja, you cannot ask. Sir, please explain the process of the KAPS exam. Okay, so the CAPS exam का basically जो first step होता है, you just need to apply for skill assessment, then you need to write the CAPS exam. Okay, so CAPS exam basically ये बहुत ही easy exam है. तो इसमें basically दो पेपर होते हैं, सेम डे के अंदर आपको दो एग्जाम पास करने होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2. Okay, so paper 1 have 100 questions. This is all are MCQ based. This is a 2 hour they will give you. So you have to answer 50% in that. Okay, then you will get a 1 hour break. Then after 1 hour break, another paper 2, again 100 questions and 2 hour time. So 50% is the passing. So this is generally mostly they ask from pharmacology, pharmacotherapy, and pharmaceutical chemistry. You know, all those calculations, all those parts they ask. But we have very short syllabus. So if you follow our syllabus, you can 100% pass the exam within 3 months. So this is a passing the exam is very easy. Yes, next please. Any questions? Please ask. Any doubt?
Yes, I mean, any other question? Yes, Masood. Please do ask your doubts. I think, sir, they are not asking any questions. I am going to ask them a question. Then. Yes. Yeah. What is the full form of KAPS? Knowledge Assessment of Pharmaceutical Sciences. Very good. Very good. And how many papers are there? There are 2 papers, so you have to complete those 2 papers in the same day. Okay, so there is a 2-hour question, 100 questions they will ask, MCQ based, then 1 hour break, then second paper, again 100 questions, MCQ based, and 2-hour time. And you just need to score 50%. Sir, which visa we got after passing CAPS? Is a fresher? As I told you, you can get 190, 491, 407. So you cannot apply 2 visa, 482, 494. They require 2-year working experience. But 0 experience, you will get 407 working visa plus 190 and 491. Okay, sir. Thanks. Thank you. Sir, what are the difference between those visas? So basically, you know, कि 407 visa basically होता है work visa. Means they will give you the visa 1 or 2 year, 3 year, then you can work. You know, the employer has to give you a job. They have to give you job offer letter. Then only you can apply 407 visa. But 190 and 400 visa, they are a permanent visa. So you can live and work permanently in Australia. Okay, so 190 basically you can live and work in that particular state anywhere, but 491 visa you only need to work in the regional area. You cannot live in the main city, for example Sydney and Melbourne. Apart from Sydney, Melbourne and Brisbane, any city you can live and work in Australia. Yes guys, please ask your question, doubts. आप लोग तो ऐसे शर्मा रहे हो। जब मैं स्टूडेंट था तो हमारे पास तो कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी थी नहीं हमारे कॉलेज में, कोई हमको आया हमको बताया कि ऑस्ट्रेलिया कैसे जाना है या विदेश में कैसे जाना है। आपको अपॉर्चुनिटी है, आप लोग उसका यूज नहीं कर रहे। अगर आप नहीं पूछ सकते तो कम से कम आप कमेंट ही कर दो, तो मैं उसको रीड करके आपको आंसर कर देता हूँ, ठीक है। या अमीन सर वहां पर क्लास में आपके, वहां से आप पूछिए कोई भी क्वेश्चन। फिर बाद में आप लोग बोलते हो कि फार्मेसी का स्कोप नहीं है, कि बेकार कोर्स हमने ले लिया और ये है वो है। अभी अपॉर्चुनिटी है तो अपना आपको एक्सप्लोर करो, कोई क्वेश्चन पूछो, जो भी डाउट्स है आपके पास। So there is one सर, feedback. इंडस्ट्री फार्मासिस्ट के लिए कुछ स्कोप है वहाँ पे? मैंने बताया था कि स्कोप है। इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट पर आप लोग माइग्रेशन कर सकते हो, मगर उसके लिए वर्किंग एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है, 1 ईयर का इंडस्ट्री, ठीक है। और इंडस्ट्री में स्कोप थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये लोग इंडिया से ही मेडिसिन को बाय करते हैं, ठीक है, इंडिया से या दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। तो ये लोग इंपोर्ट करते हैं मेडिसिन, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया हाई इनकम कंट्री है, पॉपुलेशन ज़्यादा है नहीं, तो इंडस्ट्री थोड़ा कम होती है यहाँ पर। ज़्यादा जहाँ अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है रिटेल फार्मेसी में और हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। और चैट बॉक्स में हमने ये अपना फॉर्म डाला हुआ है, फीडबैक फॉर्म, प्लीज इसको फिल कर दें। बाद में भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन इसके फॉर्म में लिख दीजिए, हम आपको कॉन्टेक्ट करके बताएंगे, ठीक है। सर, बेसिकली कोर्स इन रेगुलेटरी अफेयर्स? बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, बहुत सारे कोर्स हैं। तो
ये इंडिया नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको दो चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कौन से कोड से आपको पीआर मिल सकता है, वीजा मिल सकता है, ठीक है। और तो फार्मासिस्ट की यहाँ डिमांड है, इसीलिए फार्मासिस्ट यहाँ लिस्ट के अंदर है। तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल एक ऑक्यूपेशन की लिस्ट निकालती है कि कौन कौन सी ऑक्यूपेशन की डिमांड है, कौन कौन से ऑक्यूपेशन इनको चाहिए। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर नहीं है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में जॉब नहीं मिल पाएगी, आपको वापस इंडिया जाना पड़ जाएगा। तो अगर आप रेगुलेटरी अफेयर में यहाँ पर एमफॉर्म करने आते हो, फॉर एग्जाम्पल एमएस करने आते हो, तो वो लिस्ट में नहीं आता है। एमएस हो गया या फार्माकोविजिलेंस हो गया या क्लिनिकल रिसर्च हो गया, मेडिकल राइटिंग हो गया, मेडिकल कोडिंग हो गया, ये सारे ऑक्यूपेशन जो है लिस्ट के अंदर नहीं आते हैं। आप फार्मासिस्ट हैं तो अपने कोर ब्रांच पे जाइए, आपको एग्जाम लिख के यहाँ पे आइए, बहुत ही अच्छा स्कोप है, ठीक है। तो ये सारे जो है लिस्ट में होते नहीं है, इसीलिए आपको पीआर वीजा नहीं मिल सकती है अगर आप ये कोर्स करते हो इनमें से। तो यस, यहाँ पर कोर्स तो मिल जाएगा, कोर्स तो यहाँ पर होता है रेगुलेटरी अफेयर में। Sir, any scope for research there? यस, रिसर्च का इज गुड स्कोप। रिसर्च बेसिकली होती है पीएचडी वाला, इज नॉट जस्ट अ बैचलर डिग्री होल्डर। So you have to do master degree and PhD, then after that definitely there is a good scope for research as well. Yes guys, any other question? Sir, those who have cleared PT, what is the process? PT clear? No, so PT थोड़ी आप Those who have जॉब, already cleared the PT. अगर आपने पहले ही PT कर लिया तो फिर आप यस, अगर आपने पहले ही पीटी कर लिया, पीटी करने की जरूरत नहीं है आपको। कैप्स पास करके तो फिर आप इमीडिएटली वीजा अप्लाई करोगे। अगर आपने पहले से ही कर लिया तो पीटी आप पहले कर सकते हो या बाद में कर सकते हो, उसकी कोई भी कंडीशन नहीं ऐसी। तो अगर आपने पहले ही कर लिया है तो दोबारा से करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही कर सकते हो कैप्स एग्जाम को पास करने के बाद। If you have any box, Yes, please any other mention your questions in the chat box. No, yeah, I think Mohammad Noman is, you are a Pakistani or Indian? मोहम्मद नोमान, ये अजीब और गरीब कुछ नहीं, इन्हीं पाकिस्तानी के होते हैं जनरली, इंडियन के नहीं होते ऐसे, इंडियन समझदार लोग होते हैं। यहाँ पर वीजा 2-2 वीक में मिल रहा है, एक वीक में मिल रहा है। हमारे जितने भी बच्चे आज तक पास किए हैं, इवन हमारा एक स्टूडेंट अभी पास किया, उसको वीजा मिल गया 3 दिन के अंदर। तो ये टाइम नहीं लगता है इमिडिएटली, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 तरह के ऑक्यूपेशन होते हैं। एक तो होता है कि आपका फास्ट ट्रैक में आपका ऑक्यूपेशन है नहीं, कितनी डिमांड है उसके अंदर, तो गवर्नमेंट में किसमें रखा हुआ है। तो फार्मासिस्ट जो है उस लिस्ट के अंदर आता है और ये 2-3-4 वीक में वीजा मिल जाती है, उसमें टाइम नहीं लगता। यस, अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, आपने कुछ और किया हुआ है, उसमें 1 साल 1.5 साल भी लग सकती है। तो जो वीजा डिपेंड करता है कि आपका ऑक्यूपेशन कौन सा है, उस ऑक्यूपेशन की कितनी डिमांड है। तो फार्मासिस्ट की करंटली हाई डिमांड है, इसीलिए उसको वीजा बहुत ही जल्दी मिलता है, बहुत ही फास्ट वीजा मिलता है। ये एक हमारे प्रीवियस बैच में एक स्टूडेंट था अहमद करके, तो वो नए नए क्वेश्चन ले लेकर था। तो उसका एक क्वेश्चन था कि सर फार्मासिस्ट को वीजा मिल रहा है 33 मंथ के अंदर। तो मैं बोला तूने कहाँ से निकाल के लाया, बोला सर मैंने कहीं सुना है। और उसको खुद को वीजा मिल गया 3 वीक के अंदर, तो अभी उसको मेलबर्न का वीजा मिला हुआ है, वो पाकिस्तानी लड़का था, ठीक है। तो वीजा आप कहीं के भी पूरी दुनिया में, अगर आपने एग्जाम पास कर लिया, अभी हमारे आपके यहाँ से गुजरात से हमारे 2 स्टूडेंट थे, ध्रुव जोशी करके एक स्टूडेंट था हमारे लास्ट बैच में, उसको 491 वीजा ऑलरेडी मिला हुआ है विक्टोरिया का। जाने लगी कार में, कई बात नहीं लगी तो पहले तैयब, मोहम्मद तैयब, या तो कहाँ में जाएंगे। म्यूट करो। यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Yes, yes, you can come or study visa. So you have to do any master degree.
like Master of Public Health, Master of Healthcare Management, GMP is there, Master of Good Manufacturing Practice, or there are so many other courses, Master of Pharmaceutical Sciences. But these courses cannot give you the permanent visa. So we have so many students, they came from India, they are studying in Australia, they invest 20-30 lakh. After that, they are writing the KAPS exam. So this is the opportunity for you. You can write the exam, you can come from India, or you can come on a study visa and you can write the exam. It is up to you. You can do masters and PhD in Australia. Yes, please. Next question. No, it is very, very easy. If you are thinking to get PR worldwide, so Australia is the easiest pathway to get visa at the moment. We have, I think, more than 20 students. They try for 2 to 3 years. This Dhruv Joshi itself, he is from somewhere from Ahmedabad. Okay, so he and his wife, they try for 2 years for Canada. They, I think, lost 3-4 lakh rupees. There is some agent in Ahmedabad, and they finally got in touch with me, and I convinced them to come to Australia, and they passed the exam in first attempt, and they got the visa. Okay, so many people think that they can go easily for Canada. So even Canada, there is a very, very tough process to get registered there. The passing rate is 20%. Australia CAPS exam is a 80% people pass. In our academy, 93% students pass in first attempt. So Australian process to getting a visa and to pass the exam, both are very, very easy. Yes, Hardik. Sir, Ravi Gupta has asked for assistant pharmacist. What we have to do, sir? Assistant pharmacist की कोई job नहीं होती. Assistant pharmacist only for those already in Australia. तो कोई वीजा नहीं होता है assistant pharmacist के लिए. Okay. ठीक है? And sir, Abhishek Patel has asked, is working there in Australia and in any other countries have difference in scope? Yes, definitely. There's a high income country like Australia, US, Canada. There's a high standard in the practice. So you have to learn that practice, how you can work. That's why Australia keep this 1 year internship, because you learn or study in India. So you cannot work in Australia as a pharmacist. You don't know about Australia culture, just how you get with the patient. Lot of different medicines are not available here, and some medicines are not available even in India. So lot of difference basically even the practice wise also. There is a the aspect is a very, very, I can say, once you become a pharmacist, you will confident, you will feel basically proud. Yes, you did your degree and you are a pharmacist here. Okay. Even myself, I'm a pharmacy lecturer here. So last week I went to get some medicine to a pharmacy. So the pharmacist was my student. Okay. So around 50 minutes around, I wait to get my medicine, So that much, there is a lot of process, they have to check each and everything, then only they will dispense. And without pharmacist signature, you cannot get a single tablet in Australia. In India, you can whatever you want, even you want to buy benzodiazepines, you can get in India. It's very, very easy. Yeah, some states are very strict regulation, but some states are very, very, you can buy anything like UP, Bihar, Delhi, all those states. I have no idea about the Gujarat, you can get or not. But, even the antibiotics, if you want, easily you can get. But in Australia, without prescription, you cannot get a single tablet. So there's a huge difference in Australia there. Sir, Hi, sir. Krupali has asked, sir, which are the good institute to study masters in Australia? So basically, this is based on your pocket. If you have money, then you choose the top university, University of Sydney, University of Melbourne. So Australia have a top
country, I mean top universities here in the world. So University of Sydney have 40 rank in the world. Okay, even IIT we have around 167 rank, minimum rank for, you know. So you can compare in Indian education system in Australia. So University of Sydney, University of Melbourne, you know, or you can go G8 University. If you type on Google G8 Universities Australia, these are the top 8 universities in Australia. You can go for any of these universities, good universities for the admission. हाय सर, गुड आफ्टरनून। Hi Anmol. हाँ जी सर, मैंने रिसेंटली मेरा स्टूडेंट वीज़ा मैंने अप्लाई किया था मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए, लेकिन वो मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है। तो मेरे लिए अब कौन सा मतलब ये बेस्ट रहेगा? यस, कैप्स ही बेस्ट है। और तुमने पहले तुम्हारा बेसिकली अभी क्या हो जा रहा है, कुछ थोड़ा सा इशू यही चल रहा है कि बहुत सारे इंडिया में बच्चे क्या करते हैं कि फाइनेंशियल जो मनी होती है ना, हाँ वो जी। सही से नहीं दिखा पाते हैं। मतलब उन्होंने कहीं से ले लिया, जुगाड़ कर लिया। एक्चुअली मेरी सिस्टर है, वो सिटीजन है ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिस्बेन। मैं बता रहा हूँ जो जनरली क्या हो रहा है। आप बेसिकली या तो तुम जो है पंजाब या हरियाणा से हो, या तुम गुजरात से हो। यस, ये 3 स्टेट ब्लैक लिस्ट से चल रहे हैं आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इनका प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पर एजेंट के थ्रू ये लोग वो कराते हैं अपना वीजा एडमिशन और एवन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे पता है। ठीक है, तो उसमें वीजा में मेनली वो देखते हैं कि जब भी आप स्टडी करना है तो आप ये बताते हो कि आप स्टडी करके इंडिया वापस जाओगे, और इस कोर्स का बहुत ही अच्छा स्कोप है इंडिया के अंदर। दैट्स व्हाई यू केम टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। हाँ जी। मगर अगर ऑफिसर को ये लग गया कि आप ऑस्ट्रेलिया छोड़ कर नहीं जाओगे, आप ऑस्ट्रेलिया में ही रुकोगे, वो आपको वीजा नहीं देगा। ठीक है, और सेकेंडरी वो देखता है फाइनेंशियल आपने कैसे मैनेज किया है, पैसा आपने कैसे मैनेज किया है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें देखी जाती हैं जिसकी वजह से आजकल बहुत ज्यादा रिफ्यूजल हो रहा है। तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप चुपचाप से एग्जाम पास कर लें। क्या बहुत ही कम खर्चा है। अगर आप स्टडी करने जाते हो मास्टर ऑफ फार्मेसी तो मिनिमम 70,000 आपको फीस पे करनी पड़ती है। फीस जो है यूनिवर्सिटी की, आपका रहना खाना अलग रहा तो यानी कि ये जो फीस टोटल जो खर्चा हो जाता है, ये हो जाता है करीब जो है 60-70 लाख के आसपास। ठीक है, इवन 30-35 लाख तो आप खाली फीस ही पे करते हो 2 साल की मास्टर ऑफ फार्मेसी के लिए। अगर आप ये कैप्स करके आते हो तो आपको 4-5 लाख में ही आपको सारा काम होता है। तो सर, ये ये बेस्ट है पूछना अभी था एग्जाम। कि मेरा रिफ्यूजल का इस पे तो नहीं इफेक्ट पड़ेगा मेरे कैप्स नहीं के नहीं पे? नहीं नहीं, वो स्टूडेंट वीजा रिफ्यूजल ही हुआ था। ये आप करोगे स्किल्ड वीजा। हाँ जी। इसका एग्जाम पास करने के बाद आप बोलोगे आप मैं स्किल्ड हूँ, मतलब मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैंने एग्जाम पास किया है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है उसका। ओके। हाँ, अगर कुछ आपके कुछ फॉर एग्जांपल कुछ पापा उन्होंने कि ना कुछ पुलिस से इनपुट मिला, कुछ आपकी बैकग्राउंड में कुछ प्रॉब्लम नहीं, है, तो कुछ वो नहीं। वो एक अलग रीजन है। बट अगर आपका वीजा रिफ्यूजल हुआ है लाइक फाइनेंशियल या उस पे, या उनको ऐसा शक हुआ कि आप यहाँ रुकोगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। Thank you, one more. You can just join or pass the cap. Definitely, you will get the visa. Okay, sir. I will. सर And आई please, हैव ए क्वेश्चन uh, सर। yes, Mohammed. सर मैं बोल रहा हूँ, मैं BMLT 3rd ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अभी की प्रिपरेशन लूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। मैं नहीं नहीं अभी नहीं 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 नहीं, ऑस्ट्रेलिया आने के लिए फार्मासिस्ट को जीरो एक्सपीरियंस यू कैन कम टू ऑस्ट्रेलिया वर्क एज ए फार्मासिस्ट, बट लैब टेक्नीशियन नीड मिनिमम 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। तो पहले आप 2 साल इंडिया में जॉब करो और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचना। तो अभी आपका कुछ नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू। थैंक यू। देखो, दिस इज द एडवांटेज फॉर यू गाइस इफ यू आर ए फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट को जीरो एक्सपीरियंस पे वीजा मिल सकता है, एग्जाम में आप बैठ सकते हो, मगर जो लैब टेक्नीशियन है उनको 2 साल का मैंडेटरी है वर्क एक्सपीरियंस होना। ठीक है, यस, नेक्स्ट प्लीज, अंकित सिंह। Sir, Miten Sutaria has one question. Which city is better for us, a pharmacist for early job and PR? दिस इज नॉट कि ऐसा कर, वैसे तुमने फार्मेसी डिग्री किया हुआ तो कोई इतना बड़ा वो नहीं है, तुमने कोई IIT से डिग्री नहीं किया है कि तुमको भी एक चॉइस चाहिए कि कहाँ जाना है। ऑस्ट्रेलिया का जो कोई भी सिटी है, गांव भी है ना ऑस्ट्रेलिया का, विलेज भी ऑस्ट्रेलिया का, वो इंडिया की सिटी से 100 टाइम्स बेटर है वो। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, जब आप एग्जाम पास कर लेते हो
तो आप 5 स्टेट को अपना EOI फाइल करते हो, मतलब आप 5 स्टेट में आप अपना एक्सप्रेशन शो करते हो जहां भी पर भी आप जाना चाहते हो। फिर उन 5 स्टेट में से कोई भी 2-3 स्टेट आपको नॉमिनेशन करेंगे, फिर उनमें से आप चूज करेंगे कि आपको कहाँ आना है। तो आप पहले से नहीं कर सकते कि कौन सी सिटी में आपको जाना चाहिए या कौन से स्टेट में आप जाओगे वहीं पे आपको जॉब मिलेगी क्या। ऑस्ट्रेलिया में अपॉर्चुनिटीज जो जॉब की है वो शहर में नहीं है, जो छोटे शहर है वहाँ ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। उसका रीजन ये है कि जो जितने भी जो 8 फार्मेसी कॉलेज है ये मेन सिटीज के अंदर है, तो लोकल बच्चे जॉब मिल जाती है सिटीज में, वहां जाने जाते हैं रीजनल एरिया में। तो जो माइग्रेंट फार्मासिस्ट हैं वो उनको जॉब मिलती है रीजनल एरिया में। और रीजनल एरिया में जाने का और फायदा ये भी है कि आप ज्यादा पैसे अर्न कर सकते हो, ज्यादा सेव कर सकते हो, क्योंकि वहां पर लोकल लोग जाते नहीं है, इसलिए सैलरी ज्यादा मिलती है। और वहां पर पॉपुलेशन इतनी नहीं होती है, तो इसलिए ज्यादा खर्चा ही वहां पर कम होता है, तो आप ज्यादा पैसा छोटे शहर में आप अर्न कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको जहां से भी वीजा मिले बस ऊपर वाले का नाम लेके अपना बैग पैक करके ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, एवरीथिंग इज फाइन यहाँ पर। यस अंकित, अनिकेत सिंह। यस अनिकेत। यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? सर यस अंकित। सर यस मांगे। सर मैं बोल रहा हूँ, मैं तो अभी BMLD कर रहा हूँ, 2 years का एक्सपीरियंस होगा, फिर मैं जाऊंगा एग्जाम में क्लियर करूंगा, फिर कितना कॉस्ट लगेगा उधर में जाने के भाई लिए? अभी आप पूछ रहे हो कि 3 साल के बाद क्या होगा, तो उस टाइम पे कुछ पता नहीं है, गवर्नमेंट यहाँ चेंज हो जाए या क्या हो जाए। आप उस टाइम पे कॉन्टेक्ट करना। पर जनरली जो पैसा खर्चा 4-5 लाख का ही आता है, ज्यादा का नहीं आता। ठीक है, ओके आप सर। अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर कोई जॉब ढूंढो, वहां जॉब करो, 2 साल वर्क एक्सपीरियंस लो, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का देखना। ऑस्ट्रेलिया या उस टाइम पे कौन सी और कंट्री ओपन करती है, वही हम तो अपडेट करते रहते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल है बेसिकली, अगर आप जाओ वहां पर तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो उसमें क्या है ना कि आप लोग, मैं हमेशा वहाँ पर न्यू न्यू वीडियो डालता था, इंटरव्यूज करते रहता हूँ मैं लोगों के, जो लोग आपकी तरह थे और फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं। ठीक है, तो उनकी कैसी जर्नी रही है, तो आप वहां से लर्निंग कर सकते हो, आप यूएस से जा सकते हो। तो ये हमारा चैनल है डॉक्टर अकरम अहमद के नाम से, आप यहाँ पर जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मैं यहाँ पर न्यू न्यू वीडियो पूरे वर्ल्ड में अंदर कि आपको कहाँ जाना चाहिए, किस कंट्री में अभी ओपनिंग है, कैसे जाना है, यहाँ पर सारी की सारी जगह पर मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो ये हमारा चैनल है, आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लें, तो आपको बहुत सारी नॉलेज यहाँ से मिलेगी। अगर आपको लाइफ में मतलब आगे बढ़ना है, कहीं भी जाना है, तो ये चैनल आपको A to Z इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है guys, any other question? Yes, Aniket. Ankit, please ask. हेलो सर। Hi. सर मैं इंडिया से डी फार्मा कर चुका हूँ। आफ्टर डी फार्मा क्या स्कोप है ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ से किया डी फार्मा? हाँ, बेसिकली जो डिप्लोमा है ना, बेसिकली ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं होता है, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर डिप्लोमा भी हो रहा है। तो इंडिया में उसको फार्मासिस्ट बोलते हैं, पर वर्ल्ड वाइड वो फार्मासिस्ट नहीं कहलाता है, वो फार्मासिस्ट नहीं है। ठीक है, तो मगर डिप्लोमा आपने कर लिया तो स्कोप उसका क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप एज ए फार्मेसी टेक्नीशियन या असिस्टेंट फार्मासिस्ट आप जॉब कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी, और मिडल ईस्ट में लाइक दुबई और ओमान, कुवैत, ऑल दोस कंट्रीज में जॉब मिलती है डिप्लोमा वालों के लिए भी। So, sir, I think we can wrap up now because there's no question from here. Okay, 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 guys. Thank you so much for your time. I am looking forward. Yes, सर please मैं ये ask your पूछ रहा था, जैसे इंडिया से जो डिप्लोमा कर रखे हैं उनकी जो भी कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ कंट्रीज में डिप्लोमा की कोई वैल्यू नहीं है। यस, वो तो ऑब्वियसली डिग्री चाहिए हर जगह, डिप्लोमा कौन पूछता है आज की डेट में, अच्छा, लोग वैसे डिग्री। अगर डिप्लोमा के बाद हम वहां से बैचलर्स करना चाहें तो ऑस्ट्रेलिया हाँ, से? तो आप ऑस्ट्रेलिया में अगर आपके पास इतना रुपया होता तो आप शायद बी डिप्लोमा करते ही नहीं। फीस मालूम है कितनी होती है बी फार्मा की? यह हो जाएगी 1 करोड़ रुपया फीस इंडियन रुपीज में।
तो अच्छा बेटर है कि वहीं से कर लो इंडिया में ही। बी फार्मा ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ का 1 रुपया ऑस्ट्रेलिया में 55 रुपए के बराबर होता है, तो कितनी फीस हो जाएगी? यस किड्स एली के लिए प्लीज आस्क द हेलो क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। यस प्लीज। सर मैंने PGIMS रोहतक से किया है, बैचलर ऑफ फार्मेसी 2021 में। यस अभी तो अभी मैं क्या सर करते हो? रिटेल फार्मेसी में जॉब कर रहा हूँ, अच्छा लखनऊ में सर, ओके उत्तर वेरी गुड। प्रदेश में। हाँ मैंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है लखनऊ से, और मैं सोच रहा हूँ सर ऑस्ट्रेलिया के लिए या दुबई के लिए। हम दोनों जगह का करवाते हैं। हमारे यहाँ पर एक नंबर दिया गया है हमारे इसमें जो है जी जी चैट बॉक्स में, आप उसको फिल कर दो और टीम आपसे खुद ही कांटेक्ट करेगी, ठीक है? जी आप हम दुबई का भी कराते हैं और ऑस्ट्रेलिया का भी जी कराते हैं, जी वो जी आपको पूरा पूरा समझा देंगे कि कौन कौन सा प्रोसीजर क्या करना है, ठीक है? जी। ऑस्ट्रेलिया के लिए सर ट्रेनी फार्मासिस्ट के लिए क्या प्रोसेस है? वैसे विजिट वीजा नहीं पे आना पड़ता है? नहीं, कोई ऐसा कोई वीजा नहीं होता। आपको कैप्स एग्जाम ही पास करना पड़ेगा। विदाउट एग्जाम पास किए हुए जी कोई ऐसा रूट नहीं है, कोई वीजा नहीं मिलता ओके उससे। ओके सर, थैंक यू सर। यस ये और दुबई दु, के लिए है ना सर हाँ ट्रेनी यस फार्मासिस्ट? यस दुबई की नहीं होता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया की नहीं है ये वाला प्रोसेस। और ये जो है हमने ये दिया जी हुआ है, ये जो है फॉर्म डाला हुआ है हमने फीडबैक फॉर्म को, आप प्लीज इसको फिल कर दो तो हमारी जी जी, टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं फिल कर दे रहा हूँ। सारे सर लोग इस इजी फॉर्म को। एग्जाम कौन सा होता है, DHA और मो और हार्ड? डीएचए बहुत ही इजी है, हम आपको पास करा देंगे 100%। जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन एंड अस्सलाम नाउ वी वालेकुम। कैन चलो so we can finish here. Okay, thank you so much guys. हेलो सर, आई हैव वन क्वेश्चन।